Good evening, everyone. We have been discussing Unit 2, Principle and Theory of Administration. Just ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା କି syllabus ରେ କ'ଣ ଅଛି and we will continue that. And here we have been discussing Taylor. Taylor ରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ discussion କରିଥିଲା. We will continue from here. Before start, just 2 minutes. I will take 2 minutes. So here we are discussing about public administration optional. I teach public administration optional, and I have written this book, BK publication, Odisha Civil Service Examination, complete syllabus coverage. And everyone who will start reading public administration, you must remember the syllabus and understand the interrelation between different units, and read some unit of paper 1 and paper 2 together as they are interconnected. Analyze the previous year question and make structural note for quick revision. These are some units that you must read together. Structure of before reading central and state, read structure of public organization, public policy and machinery of planning, personnel and public service, financial and control of public expenditure. These are related. And this year, rank 1 to rank 101, 11 public administration student and 7 for our group of our class. 7. And this is rank 10, rank 18, 25, 44, 54, 73 and 101. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So as I said, 7 and total 36 selection. And this is last year SK Prushti, rank 1, OCS rank 1. Last year also these people are got through. This year more good result. Last year inside 100 we have just 5 students in top 100. Last year 5 students. Still we have rank 1, rank 41, rank 58, 71, 78. 5 students in top 100, and this year 6 students and 7 students in top 101. And just so everyone's mark 1 to 1 ରୁ 101 ଭିତରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାର୍କ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦଉଛି. rank 10 optional 333, rank 18 308 optional, rank 25 297, rank 44 optional 293, rank 54 327, rank 73 334. I think this is the highest in OPSC. What I know, I think this is highest. Because 1 ରୁ 100 ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ କଥା, but ଆମ class ର ଏଇଟା highest 334 and this is 306. Okay, and बाकी बहुत लोगों मार्क अच्छी 300, 303, 290, 288, 281, 320. Ipsita Sahu 241, her mark is 320. And only with public administration she got a good rank. Chinmay 306, Jagannath 325. देखो GS1 102, 108, 120, 128. Optional 325 and essay good mark. He got through. 295. Bhattakrishna 281, 284. Mukesh 318. GS1 81, 127, 140, 132, 318. Very good mark. Sanjeev 288, 300. Pranati 300. बाकी सबुतरे खराब मार्क अच्छे स्टिल 300. एंड बहुत पिला अछंती जो माने सिलेक्ट ही नांती स्टिल दे गॉट गुड मार्क. ओके 303 जने आनी छे 288, 300 रे भी सिलेक्ट ही नहीं बट 300. आ जने
327 आनिकी भी सिलेक्ट है नहीं 305 ओके अच्छा सो हमारा क्लास रो प्लान complete syllabus focus on conceptual clarity you got class note which you write nije class note rakhibo current update and discussion of 480 previous year question and 10 mock test you'll have model answer of 10 टेस्ट रो भी और 480 क्वेश्चन रो भी मॉडल आंसर you will get and second year से current affair okay this you will get and this is the contact number you can contact with it okay so we have discussed tailor of question now fuel let's discuss shortly ame केमती fuel को मने रखिबा fuel I have told IBC intro body conclusion method conclusion रे criticism and present relevance with some current affair and body as I said POC plus 14 principle that are universal principle intro about Fayol who is Fayol belongs to classical group what is his work some book he has published why he is important his experience working in public and private sector his principles are universal principles that can be used in both public and private sector another thing Fayol ro 14 principle Gaulick ro 10 principle Orbic ro principle it देखो syllabus these are ହେଲା so unity of command hela span of control hela authority responsibility coordination supervision centralization decentralization delegation these are one of the principle of Fayol Gaulick and Orbic तो syllabus तमे मने रखि देला principle मने रखि देला सेति में मु कहूची syllabus मने रखो syllabus मने रखिले principle भी मने रहि जिवो Fayol ro 14 principle Gaulick ro 10 principle Orbic ro 8 principle simple POC plus 14 principle एथि की मने रखो Fayol is classical theorist POC plus 14 principle criticism already you can write that Fayol is criticized by human relation theorist Hilton Mayo and behavioral theorist because he reject or he neglect human aspect in organization he neglect behavioral aspect in organization okay POC मने रखिबाटा बहुत इजी planning organizing controlling commanding coordinating planning organizing controlling commanding coordinating five principle yes एबे एथि की जानो and 14 universal principle that can be used in public and private sector to gain success that can be used in both public and private sector okay after that Gaulick postcor plus 10 neutral principle Gaulick सेति की जानो postcor plus 10 neutral principle Gaulick same intro body conclusion आमे detailed discussion करिबा intro body conclusion how we write how we manage a 250 word question आज क्लास रे एति की जानो Gaulick means postcard
cross 10 neutral principle. So whether it is universal principle or neutral principle, they can apply it in both public and private sector. So administration is administration, nothing public about it. Post curve again, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting. ବୁଝ ବୁଝ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଲିଙ୍କ କର ହେଲା ଏଇଟା ରଫଲି କହୁଛି ତ ଏବେ ଶୁଣ ଖାଲି this is not final notes reporting roughly କହୁଛି bear with it detail ମାନେ this is not final notes এটা ଖାଲି ଗୋଟେ briefing କରାଉଛି ତମକୁ अच्छा planning organizing staffing directing coordinating reporting budgeting planning organizing staffing directing coordinating reporting budgeting ठीक ଅଛି fuel रो थिला प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग कमांडिंग कोऑर्डिनेटिंग ठीक है मन रखियाटा इजी बहुत किसी कॉमन अच्छा एबे जो मु सब बड़े कहे प्रेजेंट रिलेवेंस ऑफ ए थ्योरिस्ट इन प्रेजेंट टाइम फ्यूल फ्यूल कहला प्लानिंग नीति आयोग प्लानिंग करूची कोऑर्डिनेटिंग आईटी फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन गति शक्ति it facilitate coordination बुझो गोटे स्ट्रक्चर बुझो कि when you write fuel answer you write that fuel intro body fuel POC plus 14 principle criticism fuel is criticized by human relation and behavioral theorists and in present day fuels some of the idea of fuels is relevant like planning is relevant because Niti Aayog also do planning coordination is relevant because every organization focus on coordination be it central government state government Gullik. So when we write Gullik answer, Gullik will be planning. So Gullik idea of planning is very much important. Coordinating is very much important. Budgeting. When you write question budget, financial administration. Okay. So budget ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ Gullik को. Gullik is a classical theorist. Give his theorization post curve where budget is important. The framework. I am giving you just a framework. ସେଇଥିପାଇଁ introduction class ଏଇଟା not ଆମର detail class ଠିକ ଅଛି ତ this is how you write a answer ସେଇ content ରୁ criticism contemporary approach with some example so when you write about Niti Aayog that Fayol's idea is relevant in present day his idea of post core planning is important definitely evaluator impress ହବ and you will get good mark ହେଲା ତାପରେ Urbic ର ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ Orbic has given 8 principles. So one of the principle is principle of correspondence. Important principle गोटे कहि दउची principle of
correspondence. Principle of correspondence कहूची authority commensurate with responsibility. Same authority commensurate with responsibility. Idea given by Fayol also, Gullik also. What is this? Authority must equal with responsibility. Whatever authority someone have, he must have same amount of responsibility, not more, not less. Authority without responsibility is disastrous. Responsibility without authority is meaningless. And question भी आसे मु देखे दोजी तुमको question. How does a organization distribution of authority and responsibility impact its efficiency and effectiveness? So organization must ensure that authority must equal with responsibility. Only then efficiency and effectiveness will increase. बुझो थ्योरिस्ट डायरेक्टली मागी नहीं, बट से क्वेश्चन भितरे तुमको इंपाइट करबा को पड़िबो थ्योरिस्ट मानकर ना. You have to write about principle of correspondence. You have to write about idea of Fayol. बहुत पिला कहले थ्योरिस्ट पचारि नै, बहुत पिला कहले क्वेश्चन बुझी पारिलु नाही. क्वेश्चन केतेबेले बुझी पारिबो जेतेबेले तमे 360 डिग्री डायमेंशन रे पढिबो कि अच्छा अथॉरिटी रेस्पोंसिबिलिटी अच्छा ए माने कहि दै जंदी तो माइंड रे आसी जिबा कथा कि फ्यूल कहिछि गलिक कहिछि ऑर्बिक कहिछि. प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस you should know. And this statement, particular statement, authority without responsibility is disastrous. Distribution of authority and responsibility means whatever authority you give to a position, he must have that amount of responsibility. Hello. अच्छा our authority responsibility देखो straight authority always commensurate with responsibility. This is principle of correspondence. तुमको पूरा बुझिया को पड़िबो को थ्योरिस्ट कोन कहिछि काहे की कहिछि and you have to interlink many things. अच्छा आउ two question. And it would authority and responsibility ଦେଇଛି itself it is a principle authority and responsibility. Okay, तो एति के मन रखो principle of correspondence authority is equal to responsibility fair. Next theorist Max Weber. Very simple, you people are going to be part of bureaucracy. So Max Weber is father of bureaucracy. So what is bureaucracy? Bureaucracy is a group of individuals who are scientific, who are rational, who are selected on the basis of merit. They get training. After training, they appointed to a particular position in organization where they work in a coordinated manner to fulfill the goal of organization. They get salary, they get promotion, they get post-retirement benefit. Instrumental aspect, Max Weber focus about instrumental aspect of bureaucracy. We will discuss what is instrumental and what is institutional. What is instrumental aspect of bureaucracy? What is institutional aspect of bureaucracy? Which is good, which is bad? And you need to know Max Weber. It is again important for development administration. Development administration रे पुणी Max Weber idea आसीबो. Max Weber explain about three type of authority. Traditional authority,
charismatic authority, legal rational authority. Traditional three type: patriarchal, patrilineal, patrimonial. Two type of administrative system: feudal, patrilineal. Charismatic based on charisma. Charismatic authority turned into legal rational, routinization of charisma. What is legal rational authority? Authority that flow from law, that which is rational, which is just, that is legal rational authority. ହେଲା ଗୋଟେ କିଙ୍ଗ ରାଜା ଅଛି ସେ ହେଲା ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଅଥରିଟି. କ୍ୟାରିସମେଟିକ ଅଥରିଟି ଗୋଟେ ବାବାର ବହୁତ ଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହିରୋର ବହୁତ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ହେଲେ କ୍ୟାରିସମେଟିକ ଅଥରିଟି. ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆଉ ହିରୋ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବେ, ଏମପି ଏମଏଲଏ ହେବେ, ସେମାନେ ହେଇଯିବେ ଲିଗାଲ ରେସନାଲ ଅଥରିଟି. ଲିଗାଲ ରେସନାଲ ଅଥରିଟି ମିନ୍ସ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଜଣକୁ ଅଥରିଟି ଦବ. ତମେ କାଲି ସକାଳେ ଓଏସ୍ ହବ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତମକୁ ଅଥରିଟି ଦେଲା. ତମେ ଓପିଏସ୍ ହବ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତମକୁ ଅଥରିଟି ଦେଲା. So that is legal and that is rational. ଗୋଟେ ବାବା ଏମପି ହେଇଗଲା, ତା ପାଖରେ legal rational authority. And administrative system under legal rational authority is bureaucracy, which we are going to study. Max Weber is a German sociologist who studied dominion in society. ଏବେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେबर, ଜର୍ମାନୀର ଲୋକ. ସେ सोसाइटी को स्टडी କରିଥିଲେ, ଡୋମିନିଅନ ସ୍ଟଡି କରିଥିଲେ. ଡୋମିନିଅନ ମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିବ. And he difference between power and authority. ସେ କହିଲେ power is coercive, authority is legal rational. ତମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗନ୍ ଧରିକି ଯିବ, that is power. ତମେ କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ କି ମିଲିଟାରୀ କି ପୋଲିସ ଗନ୍ ଧରିକି ଆସିବ, that is authority. ହେଲା ତାପରେ ସେ तीन टाइप ऑफ अथॉरिटी କହିଥିଲେ, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक, लीगल रेशनल. Administrative system under legal rational authority is bureaucracy. He explained bureaucracy, he explained behavioral aspect of bureaucracy, he talked about instrumental aspect of bureaucracy, he talked about institutional aspect of bureaucracy. There are various criticism to bureaucracy. देखो bureaucracy रो criticism ऊपर क्वेश्चन आसीची, देखि दउछे, just show you a question. In an organizational hierarchy, every employee will rise or get promoted to his or her level of incompetence. Bhavo, it is criticism to Max Weber's seniority based promotion. केते भीतर concept जानी थिले तमे आंसर करि परिबो. In an organizational hierarchy, every employee will rise or get promoted to his or her level of incompetency. ଏବେ ମୁଁ କଥା ହୁଏ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ଆମ ଯୋଉ ମାନେ ଓଏସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ସାର୍ ପିଟର ପ୍ରିନ୍ସିପल. ବହୁତ ଜାଗାରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ କ୍ଲର୍କ ମାନେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇକି ଓଏସ୍ ହଉଛନ୍ତି, ହାଇଲି ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ, ବଟ୍ ହଉଛନ୍ତି, ସେଟା ପିଟର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ. ହେଲା सो क्रिटिसिज्म भी तुमको क्वेश्चन आसी पारे, डायरेक्ट न पचारे क्रिटिसिज्म. इट डायरेक्ट क्वेश्चन. वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी is most important paradigm in study of public administration. Organizational theory is heavily indebted to Max Weber. Okay, so this is सेतिकी जानो Max Weber German sociologist आ ब्यूरोक्रेसी ऊपर से स्टडी करथिले. एमपी फोलेट, मेरी पाकर फोलेट speciality. Mary Parker Follett is known as mother of modern management, focus on participative democracy. MP Follett belongs to this classical group, but MP Follett's idea match with human relation behavioral era. MP Follett सही
गोटे क्लासिकल थ्योरी गोटे एरा रे थिले सपोज एरा माने 2000 रु 2050 सेही टाइम रे एमपी फोलेट थिले बट एमपी फोलेट रो जो आइडिया थिला जो विजन थिला दैट इज फ्यूचरिस्टिक से क्लासिकल पीरियड रे थाई की भी तांको आइडिया टा क्लासिकल मानक संगे मिसु नथिला हर आइडिया मैच विथ ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियर so mp follett is not in the same page with other classical theorists remember that she is ahead of her time her idea whether it is leadership authority hela conflict hela power hela coordination hela leadership hela that is different from classical for example gote small example dochi classical theorists kono kohutile positional view of authority what is positional view of authority very simple बुझौछि तमे गोटे ओएस हेलो तमरो गोटे ब्लॉक को जाई की पोस्टिंग हैला फ्लैश पोस्टिंग so you have authority what authority is that positional authority बुझो very simple positional authority you hold a position तम पाखरे authority अछि एमपी फोलेट कोन कहले ना functional authority कोन देखो तमे वीडियो अछो तमे गोटे जाइछो गोटे एमजी नरेगा साइट विजिट करिया को जाइछो एमजी नरेगा तम संगे तमरो ए वीडियो अछि और बडाबू अछि बाकी माने समस्त अछन सेठी गोटे किछि गोटे पर्टिकुलर फंक्शन को नै कि यू हैव नो आइडिया तमे नोआ पोस्टिंग ट्रेनिंग पाई के जाइछो तम पर किछि आइडिया नै बट सेठी जो ए वीडियो अछि ही इज एक्सपीरियंस गाय ही हैज आइडिया and you have to take a decision माने तम ऊपर अछि गोटे डिसीजन नेबा को अथॉरिटी तम पाखरे अछि तो गोटे कथा कह से जगह रे when you have no idea and the a video has more idea who should take the decision वीडियो नवा कथा कि ए वीडियो नवा कथा क्विक आंसर दियो ए वीडियो जानी छी फंक्शन कोन करबा कथा कोन हुए he has proper understanding proper experience तमे नुआ जाइछो तो तमे नबो जेहेतु अथॉरिटी तम पाखरे अछि पोजिशनल अथॉरिटी कि लेट द ए वीडियो शुड टेक द डिसीजन टेल मी यस वेरी गुड ए वीडियो नवा कथा तो ए वीडियो टा कोन हैला फंक्शनल अथॉरिटी हैला फंक्शनल अथॉरिटी वेरी सिंपल बुझो तमरो पोजिशनल अथॉरिटी बट से गुटे पर्टिकुलर काम को ए वीडियो करि परिबो he has functional authority तो एमपी फोलेट कहले functional authority is important a person if someone is capable if someone can do a work efficiently then someone who hold positional authority let that guy should do ताको positional authority तापरे बनाड पाखु जेतेबेले आमे जिबा सेतेबेले आ गुटे नोआ टर्म आसीबो एक्सेप्टेंस व्यू ऑफ अथॉरिटी अच्छा एक्सेप्टेंस व्यू ऑफ अथॉरिटी कोन तम ऊपर बुझे दोचे मु people when accept you as your leader that is acceptance view of authority समस्त आराम रे बुझी जिवो बाहुबली मूवी तो समस्त देखि दिवो बाहुबली मूवी रे कोरोनेशन हुए किंग आ तारो सेनापति आर्मी चीफ किंग का वल्लार देव एंड आर्मी चीफ की हुए बाहुबली अच्छा टेल मी just you give answer V or B कहा पाखे पोजिशनल अथॉरिटी थिला को बाहुबली मूवी आई होप समस्त देखि दिबो व्हाट डू यू थिंक हु हैव पोजिशनल अथॉरिटी V और B भितरे ना 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 पोजिशनल अथॉरिटी कहा पाखे पोजिशनल अथॉरिटी थिला वल्लार देव हैला वल्लार देव ता पाखे से किंग थिला ता पाखे पोजिशनल अथॉरिटी थिला
लोक काहाको एक्सेप्ट करथिले, लोक काहाको एक्सेप्ट करथिले कि ये मोर अथॉरिटी बाहुबली को। तो बाहुबली हैव acceptance view of authority, बल्लारदेव have positional authority। काहाको डाउट अछि यदि पचार, पोजिशनल अथॉरिटी, एक्सेप्टेंस व्यू ऑफ अथॉरिटी। फंक्शनल अथॉरिटी जे गुटे काम पर्टिकुलर करि पारिबो। तमे डीएसपी हेलो, सपोज तमे काल सकाळे ओपीएस पाइलो, डीएसपी हेलो, आफ्टर ट्रेनिंग तुमको कंधमाल पठा हैला गुटे माओ ऑपरेशन, यू हैव नो एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तम साइ गुटे अछि सब इंस्पेक्टर, ही हैज 25 year of experience working in कंधमाल। तो से बेटर फिट से जगह रे एडवाइस देवा पाई। 25 year of experience in a Maoist area and you are a new DSP, first posting, so ता पाखरे अछि functional authority, तमे as a DSP you have positional authority। बुझी परला एक्सेप्टेंस व्यू ऑफ अथॉरिटी कहा को एक्सेप्ट। आ गुड एग्जांपल दोचे, सिम्बा मूवी समस्त देखि देबो, सिम्बा रणवीर सिंह थाना इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज, आउ हेड कांस्टेबल आशुतोष राणा, हेड कांस्टेबल मोइले हैला, बाजीराव सिंघम ओआईसी। इफ यू रिमेंबर जेतेबेले रणवीर सिंह एंटर द पुलिस स्टेशन, एवरीवन सैल्यूट हिम, पोजिशनल अथॉरिटी, बट हेड कांस्टेबल मोइले नॉट सैल्यूट हिम। मेरे हाथ में कुछ दर्द है, मन थी वो समझते, तो से एक्सेप्ट कला नहीं। हेड कांस्टेबल गोटे ऑनेस्ट लोकटे थिला, हेड कांस्टेबल रो आइडिया नॉट मैच विथ द आइडिया ऑफ द ओआईसी बाजीराव सिंघम, नॉट सिंघम, सिम्बा संग्राम भालेराव। अच्छा, तो एम्प्लॉई एंड मैनेजर नॉट इन सेम डायरेक्शन, तो हेड कांस्टेबल ताकू निजर अथॉरिटी भावे मानिला नाही, मने थिबो। बट गोटे टाइम आसिला व्हेन संग्राम भालेराव टेक एक्शन अगेंस्ट द गुन्स, तते बेले ऑटोमेटिक, इफ यू रिमेंबर, हेड कांस्टेबल मोइले ताकू सैल्यूट कला, मिरामार पुलिस स्टेशन आपको स्वागत करता है सर। दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सेप्टेंस व्यू ऑफ अथॉरिटी हैला। तमे वीडियो की तहसीलदार है कि जीवो फर्स्ट पोजिशनल अथॉरिटी, but with your work, with your behavior, when a time come when the employee by heart accept you as their leader, accept you as their authority, this is acceptance view of authority हैला। जेते बेले से माने एक्सेप्टेंस व्यू ऑफ अथॉरिटी, जेते बेले से माने तुमको एक्सेप्ट करिवे एक्सेप्टेंस व्यू ऑफ अथॉरिटी, देयर जोन ऑफ एक्सेप्टेंस इज वेरी हाई। से माने तुमको कंप्लीटली एक्सेप्ट करिवे, से माने तमरो कथा मानिबे, और जदि एक्सेप्ट करिवे नि जोन ऑफ डिनायल, से माने जहा कहिबो तम कथा को कान रे पुरेबे नाही, से माने इग्नोर करिवे। ओके, तो एटा हला तीन प्रकार अथॉरिटी, गोटे क्लासिकल पोजिशनल अथॉरिटी, एमपी फुलेट कहला फंक्शनल अथॉरिटी, तापर बनाड कहबो एक्सेप्टेंस व्यू ऑफ अथॉरिटी। एति की बुझो। So when you people got into the service, you should try that टिके एक्सेप्टेंस व्यू ऑफ अथॉरिटी हो, तम एम्प्लॉय माने तुमको बाय हार्ट मानंतु कि नाइ 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 हमर अथॉरिटी। After that, Hilton Mayo, already I have told you what is human relation theory. Human relation theory माने गोटे ह्यूमन बीइंग रो आ गोटे ह्यूमन बीइंग से रिलेशन, गोटे ह्यूमन बीइंग रो
गोटे ह्यूमन बीइंग रो क्लासिकल कोन भाबुतिले क्लासिकल थ्योरिस्ट ह्यूमन बीइंग इज ए मशीन ही इज कॉग इन द व्हील माने कॉग माने देखिथिबो सगड़ रो चक बाहर को न आसीबा पे एमती गोटे दिया हेता है दैट इज कॉग इन द व्हील कहंती हैला चकर एटा बाहर साइड एमती गोटे अख दिया हेता है कि चकड़ा बाहर को न बाहरी जाओ so the classical consider employee working in the organization as a cog as a part of machine बड़ गोटे machine रो गोटे छोटो part he has no social dimension psychological dimension behavioral dimension ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଇଏ ଆସିବ କାମ କରିବ ପଇସା ନେଇକି ଯିବ ପିସ୍ ରେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ପେମେଣ୍ଟ 5 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବ ପଇସା ଦେବୁ 10 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେବୁ बट मेओ कहला नो ह्यूमन बीइंग रो सोशल डायमेंशन अछि साइकोलॉजिकल डायमेंशन अछि ही इज ए ह्यूमन बीइंग से गोटे मनुष्य and reject classical approach of classical mechanical approach okay mayo and mayo conduct two experiment majorly mayo conduct two experiment mayo first is in Philadelphia that is known as first inquiry and second is Hawthorne electric company did an experiment called Elton Mayo to prove his idea that human being has socio-psychological aspects social dimension psychological dimension the first inquiry re what he find गप हिसाब रे बुझो इल्टन मेयो जने लोक थिले से एक्सपेरिमेंट कोले इल्टन मेयो कहउतिले ह्यूमन बीइंग हैज सोशल डायमेंशन साइकोलॉजिकल डायमेंशन से दिड एक्सपेरिमेंट कोले गोटे एक्सपेरिमेंट फिलाडेल्फिया टेक्सटाइल मिल रे एंड ही फाउंड टेक्सटाइल मिल रे से पाइले कोन कि द नीड ऑफ रेस्ट पीरियड फैटिक कि एम्प्लॉय कांस्टेंट माने कांस्टेंटली काम करी करी थकी जाउचंदी फैटिक हे जाउची फैटिक हेले इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होउची fatigue हेले absenteeism बढ़ुची organization रे so we focus on rest period in organization industrial fatigue और rest period Philadelphia तापरे Hawthorne electric company रे आउटे experiment कोले which is divided into four type grade illumination relative assembly bank wiring mass interview खाली सुनी था great illumination माने impact of light on productivity mass interview he conduct interview of everyone employee manakor need kono aspiration kono what they think about their superior what they think about the organization bank wiring that how condition work condition impact productivity relative assembly he tried to find out a behavior of employee group behavior of employee तापरे से कहिले आउटकम ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से कहिले आउटकम ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इज individual means important is given on individual participative management अच्छा what is participative management बुझो एम्प्लॉय जते बेले मैनेजमेंट के मैनेजर हायर मैनेजर दे डू ऑल दिस मैनेजमेंट से कहले जते एम्प्लॉय भी एसोसिएट हे जिवो एम्प्लॉय भी टेक पार्ट करिवो इन द मैनेजमेंट प्रोसेस इट इज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड इफ यू रिमेंबर हमरो डीपीएसपी रो गोटे नुवा डीपीएसपी अछि जोडा कि डीपीएसपी थ्री टाइप सोशलिस्ट प्रिंसिपल
गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल रे अछि workers participation in management of industry. This is same as Mayo's Elton Mayo's idea. And in personal administration, we will discuss relationship between employee and employer, political executive and permanent executive. And there we will discuss about something JCM, Joint Consultative Machinery for Arbitration. Again, there Elton Mayo come because JCM said employees participation in management. So individual participative management, and third informal organization. Formal or informal? समझे जानिए फॉर्मल ड्रेस इनफॉर्मल ड्रेस ऑर्गेनाइजेशन भितर दी प्रकार रिलेशन थाए ऑफिस रे मीटिंग रे फॉर्मल एका संगे लंच कले चा पीले इनफॉर्मल तो मियो कहले कि खाली फॉर्मल रिलेशनशिप रे ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सस्टेन we should have a balance between formal and informal. That informal relation, informal communication must be there. So this is outcome of human relation approach. Individual participative management, informal organization. तो बहुत इजी कौन इंट्रो लिखिबो बॉडी रे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हॉर्थन एक्सपेरिमेंट आउटकम ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इति तुमको 150 वर्ड हे जिवो तापरे क्रिटिसिज्म प्रेजेंट रिलेवेंस इल्टन मेयो डन देखो इंग्लिश माने गोटे सिखैतिले डिवाइड एंड रूल आमे ताकू पॉवेट रे अप्लाई करिबा डिवाइड एंड रूल माने इंट्रो बॉडी कंक्लूजन डिवाइड कर दबा and we will prepare a set of introduction कि अच्छा यारो ए introduction हो आरो introduction हो गोटे format जानि जिबा conclusion रो गोटे format जानि जिबा कि एटे criticism contemporary approach and body समस्त रो अलगा टेलर रो अलगा फेयर रो body POC plus 14 principle गलिक रो post curve 10 principle मैक्स वेबर रो body three type of authority traditional charismatic legal rational authority bureaucracy definition of bureaucracy criticism of bureaucracy why bureaucracy is still relevant MP Follett रो intro body रे आठटा प्रिंसिपल कि व्हाट MP Follett authority बाबद रे कोन कहिसंती लीडरशिप बाबद रे कोन कहिसंती कंट्रोल बाबद रे कोन पावर बाबद रे कोन कंक्लूजन तो देखो आमे गोटे देखो सिलेबस टाको ना तमे यदि भाबिबो कि पूरा मु स्टार्टिंग घोषिकी तो हबने संभव न फास्ट कहि दउछि मु जे भाबुछि मु घोषि देबी पूरा सिलेबस टा आ लिखि देबी ना संभव न प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बट तमे जदि एमिति गुटे स्मार्ट वे जदि रखिबो स्मार्ट वे कोन जेमति सर इल्टन मेयो आसी गला तम सामना को इल्टन मेयो गुटे वर्ड आसी गला इल्टन मेयो तो इल्टन मेयो एतो तो माइंड को सामना को आसी गला तम माइंड रे एमति विजुअलाइज हे जिबा कथा इंट्रो बॉडी कंक्लूजन इंट्रो इल्टन मेयो बाबद रे इल्टन मेयो इज दिस इल्टन मेयोस पब्लिकेशन वन टू पब्लिकेशन बॉडी रे आसी जिबा कथा अच्छा बॉडी रे आसी जिबा कथा फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हॉर्थन फिलाडेल्फिया टेक्सटाइल मिल एक्सपेरिमेंट हॉर्थन एक्सपेरिमेंट फिलाडेल्फिया रे 2-3 वर्ड रेस्ट पीरियड फैटिग एब्सेंटिज्म देखो किछि वर्ड खाली वर्ड मने रखो सेई वर्ड रु तमे आंसर लिखिबो ना कि पूरा लाइन बाय लाइन सेंटेंस मने रखिबो रिप्रेजेंट करिवो नो बिकम वेरी डिफिकल्ट बडो नै जिवो तो एमती वर्ड माने मने रखो कि अच्छा फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट करले फिलाडेल्फिया रे केतेरा वर्ड हैला फिलाडेल्फिया टेक्सटाइल मिल रेस्ट पीरियड इंडस्ट्रियल फैटिग इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एब्सेंटिज्म ई चारटा पांचटा वर्ड रे तमे सेंटेंस क्रिएट कर दबो तापरे नेक्स्ट कोन करले से हॉर्थन एक्सपेरिमेंट करले बुझी जीवो हॉर्थन इलेक्ट्रिक कंपनी रे चारटा वर्ड ग्रेट इल्यूमिनेशन तमे बुझिछो ग्रेट इल्यूमिनेशन कोन तमे लिखि परिबो सो यू नीड टू रिमेंबर
great illumination, and you need to understand what is great illumination. Relative assembly, bank wiring, mass interview, चार्टा वर्ड काम हो गला तापर आउटकम ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इंडिविजुअल देखो खाली इंडिविजुअल को अरे कौन इंडिविजुअल तमे जानी थिबा कथा ना कि अच्छा एल्टन में इंडिविजुअल को एते इंपोर्टेंस देइथिले पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जानी थिबा कथा तमे तो एठी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जानिलो यू कैन लिंक विथ डीपीएसपी यू कैन लिंक विथ जेसीएम एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बस केतेरा वर्ड तापर क्रिटिसिज्म अच्छा एल्टन में को देखो आगुरु लॉन्ग क्वेश्चन रे हमको बहुत बहुत लिखिया को पड़ुतला एग्जाम जो अप्रोच चेंज हेची इथिरे बेनिफिट बेनिफिट काहा को अछि स्मार्ट पिला को आगुरु कोन ना वी नीड टू राइट क्रिटिसिज्म 50 वर्ड कंटेम्पररी अप्रोच 50 वर्ड 60 मार्क लिखिबाटा टिके कमरसम होतला एबे कोन तमे किछि वर्ड जानिछो तमे 200 वर्ड लिखि दो एबे कोन आगुरु जो 100 वर्ड रो कंक्लूजन थिला हमको एबे 40 वर्ड रो कंक्लूजन 40 वर्ड रे 20 20 20 वर्ड रे क्रिटिसिज्म 20 वर्ड रे कंटेम्पररी अप्रोच तो तमे जदी 20 10 टा 15 टा खाली वर्ड जानिछो 10 टा 12 टा वर्ड जानिछो इल्टन मेयो बाबद रे you can write a question very easy and I will teach you how to make sentence of this word ki individual one sentence participative management one sentence informal organization one sentence how to write criticism how to write contemporary approach कोटी को एग्जांपल दबो माने इल्टन मेयो रे डीपीएसपी कथा लिखिबो इल्टन मेयो रे जेसीएम कथा लिखिबो जेसीएम रे इल्टन मेयो कथा लिखिबो एटा गोटे एमती लिंकिंग अप्रोच माने इंटरकनेक्टेड पूरा ऑप्शनल रे इंटरकनेक्टेड तो इंटरकनेक्टेड जानि गेलो बहुत कम हे गला तमे जानि जेबा अच्छा इल्टन मेयो जते बेले लिखिबी मु जेसीएम कथा लिखिबी जेसीएम जते बेले लिखिबी इल्टन मेयो कथा लिखिबी बस से कनेक्शन टा जते बेले जानि गलो पॉइंट बिकम वेरी इजी तापरे गोटे तुम एग्जाम रे ना आई एश्योर यू कि जेमती गोटे एग्जाम टाइम रे बर्डन थाए ना कि अरे मेंस ऑप्शनल अछि मु एति कि तुमको गारंटी दोउची कि ऑप्शनल टाइम रे तुमको बर्डन पड़िबोनी माने जीएस पे तुमको स्ट्रेस होबो कि हां जीएस पढिबार अछि एटा रहि गला सेटा रहि गला बट ऑप्शनल तमे जीएस 4 दे कि आसिलो गोटे दिन तमे रेस्ट भी नेले तमे जाई कि ऑप्शनल आराम रे लिखि पारिबो काहे की बिकॉज़ हमको हमरो पूरा ऑप्शनल टा ना किछि वर्ड रे लिमिट हे जिवो टेलर यू नो नीड टू मग अप 5 पेज यू नीड टू मग अप 15 वर्ड तमे इमेजिन करो टेलर रो 4 पेज घोषिबार नाही तुमको टेलर बाबद रे 20 टा वर्ड जानिबार अछि इट इज वेरी इजी 4 पेज मने रखिका अफिका 20 टा वर्ड मने रखिबाटा वेरी इजी एंड आउट ऑफ द 20 वर्ड यू कैन रिप्रोड्यूस 250 वर्ड 20 टा वर्ड रो 250 वर्ड बस तो सेते बेले पॉवर्टा बहुत इजी हे जिवो जेते बेले तमे जानि जिवो इंटरकनेक्शन कि ए थ्योरी सेठी लिखिबी नीति आयोग रे फ्योर लिखिबी फ्योर रे नीति आयोग लिखिबी पेपर 1 रे पेपर 2 रो एटा पेपर 1 एथि सेकंड ईयर से लिखिबी ए रिपोर्ट लिखिबी तो से गुटे लेवल जेते बेले अचीव हे जिवो तापर पॉवर्टा पूरा ऑप्शनल टा तुमको किछि गुटे वर्ड हे जिवो देयर इज सर्टेन वर्ड तो से जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इंस्टेड ऑफ गोटे पूरा घोषुच तुम लाइन बाय लाइन जोटा कि संभव नुह जो 50-60 मार्क आसो देख ए वर्ष तुम जदि स्टडी कर पिलांकर आइदर भलो मार्क आसी मु जहा कहूली और पूरा खराब मार्क आसी माने दीटा पेपर मिसिक पिलांकर 90 100 150 एमती मार्क आसी बिकॉज रिविजन पाई तुमको आगुरु ऑप्शनल रे बहुत टाइम मिलुतिला एबे बेसी टाइम मिलिबनी गोटे दिन गोटे दिन रे तमे दीटा पेपर पढ़ी पारिबनी बट जो शब्द मु कहूची जोटा मु कहे कि स्मार्ट नोट तमे खाली पढ़ी पारिबो कि अच्छा इल्टन मेयो रे ए शब्द अछि जोटा कि मोर मिस न हो इल्टन मेयो असला माने मोर मिस न हो कि हॉर्थन एक्सपेरिमेंट फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हॉर्थन भितरे चारटा वर्ड आउटकम ऑफ ह्यूमन रिलेशन बेस से वर्ड माने जदी लिखि दिबो ना इवैल्यूएटर गारंटी मार्क दबो इवैल्यूएटर खाली सेटा देखिबो अच्छा फिलाडेल्फिया हॉर्थन बैंक वायरिंग रिले असेंबली
great illumination, mass interview, individual participative management, informal organization. Best, you got your mark. तो the complete optional को आमे किछि word and word को जो sentence बनेवा पाई गोटे word अछि word you need to remember ताकू sentence form करिवा पाई you have to understand कि great illumination गोटे word great illumination तो ग्रेट इल्यूमिनेशन गोटे सेंटेंस केमिति लिखिबो जेतेबेले तमे जानि थिबो कि अच्छा एटा ग्रेट इल्यूमिनेशन अच्छा एटा रिले असेंबली एटा मास इंटरव्यू जोटा कि थरे पढ माने थरे बुझी गले यू विल नॉट फॉरगेट द ब्यूटी ऑफ दिस ऑप्शनल इज दैट तमे भूलिबो नाही बट हां रिवीजन करियो पड़िबो रिवीजन न कले तो मु भी निजे भूली जेबी दैट इज ट्रू जदि मु भी एबे 2-3 मास न पढे पकेट मु भूली जेबी तो मु वर्ष सारा पढुची बोली मोर मन अछि तो यू हैव टू रीड নহলে ভুলি যাবা जो दिन पढ़ा छाड़ले से भेपर होके पळेबो तो এটা হলা হিল্টন মেও আচ্ছা হিল্টন মেও পরে তারপরে বিহেভিয়ারাল গ্রুপ অফ থিওরিস্ট এটা দেখো behavioral group of theorists that means human behavior the group of theorists they give importance to human behavior they said individual working in an organization he depicts certain behavior आरो किछि behavior अछि हैला he have certain behavioral aspect से गोटे मशीन नुह से माने हिल्टन मेयो को सपोर्ट करले so human behavior and we need to understand the human behavior in order to make organization successful and ethi chester bernard was known as first behavioralist because he has given his theorization first and bernard inspired other theorists argyris Likert, McGregor, Simon, Maslow, Hosberg तो ଯେତେବେଳେ ତମେ इंट्रोडक्शन लिखिबो बर्नार्ड रो कोन लिखिबो बर्नार्ड माने आज डेट रे दी लाइन मन रखि जाओ बर्नार्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बिहेवियरल theorist he is known as the first behavioralist bernard inspired other behavioral theorists like argyris Likert, McGregor bernard inspired decision making theorist Simon motivational theorist Maslow and Hosberg Simon decision making theory Maslow and Hosberg give idea of motivation human motivation एमाने क्रिटिसाइज भी करछन क्लासिकल थ्योरिस्ट को क्लासिकल थ्योरिस्ट कहिले मनी मोटिवेशन और मोनो मोटिवेशन खाली गोटे लोक पैसा द्वारा मोटिवेटेड हबो और मोनो सिंगल बट बिहेवियरल कहले ना मल्टी मोटिवेशन खाली पैसा न पैसा संगे अन्य जिंस भी दरकार मोटिवेट हबा ओके तो चेस्टर बर्नार्ड अच्छा बर्नार्ड केमते मन रखिबो जस्ट हम गोटे ट्रेलर दे दउची इमने मु वर्ड कहूची बर्नार्ड रो हमें लिखिबा 250 वर्ड क्वेश्चन बर्नार्ड रो सपोज आसिला फ्यूचर रे चेस्टर बर्नार्ड 250 वर्ड क्वेश्चन चेस्टर बर्नार्ड 20 मार्कर डायरेक्ट न देखि इनडायरेक्ट देला किछि भी देला चेस्टर बर्नार्ड सपोज देला तो सेम आईबीसी मेथड intro body conclusion criticism present relevance intro suppose आज तमे दी तीनटा लाइन जानिलो intro रो कि बर्नार्ड behavioral theorist first behavioralist he has inspired other theorists अच्छा बॉडी रे देखो किछि वर्ड माने जेमती communication acceptance view of authority motivation decision making zone of indifference zone of denial idea of executive
बस छोटा साटा वर्ड, you just need to know 6 7 word. Communication बाबद से कौन कही, how communication is important in an organization, idea of executive role कौन, role of executive कौन, acceptance view of authority कौन, and how communication is important to ensure acceptance view of authority, how he reject classical money motivation and promote multi motivation, and how he proclaim decision making is important for organization, and what is zone of indifference, what is zone of denial, how a manager should behave like a amateur psychologist, increase zone of indifference, decrease zone of denial. बस ये गला तुम्हारा आंसर. Criticism, the situational theorist, I would ask a group situational theorist, they criticize Bernard this ground, but still Bernard's idea is important in modern day organization where employee are highly educated, they don't want to get dominated, applicable in service sector, IT industry, Infosys, TCS, the तीन example. Tailor example देवा factory, blue collar worker, behavioral white collar worker. Okay, চেষ্টা বানার ব্যাস কিছু ওয়ার্ড. তারপরে ক্রিস আর্গারিস, সেম ওয়ে ক্রিস আর্গারিস, উইল রিমেম্বার ক্রিস আর্গারিস. Argaris theory 1, theory 2, two type of theory Chris Argaris has presented. Compare between classical approach and behavioral approach. है ना. तापर क्रिस आर्गारिस Chris Argarius given same behavioral approach रे how to make organization more efficient. He has given his idea. Likert 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 system 1, system 2, system 3, system 4. Four type of organization he said. He gave a concept organizational improvement, linking pin model that we will discuss. Likert. So Likert बाबद intro जानिबा. System 1, system 2, system 3, system 4 कौन? Why system 4 is better than system 1? What is linking pin model? How linking pin is presently relevant? I can give WhatsApp group तापरे आ गोटे team software अछि, that is example of linking pin model. Yes, सेतिकी. McGregor theory X, theory Y. कौन एटा? Managerial principle. McGregor कहिले there are two type of manager. गोटे theory X manager जोटा कि क्लासिकल, theory Y manager जोटा कि behavioral. So we write characteristic 10टा character classical रो लिखिबा, 10टा character opposite कर देबा behavioral. जेमिति for example classical authority, positional authority, behavioral रो कोन acceptance view of authority. Classical money motivation, behavioral or theory Y multi motivation. Both easy, theory X, theory Y. And he conducted experiment in a particular place and he found theory Y is more successful. তারপরে Maslow, who is motivational theorist, he considered McGregor as his mentor. Theory X, theory Y, Scanlon plan, criticism, present relevance. তারপরে সাইমন, হার্বার্ট সাইমন. देखो Simon, Maslow and Horsworth, it is actually
here एठी आसीबे decision making Simon, motivation Maslow and Hausberg हैला. So same whenever we discuss Simon रो सेमती intro body conclusion body रे सेमती 6टा पॉइंट अछि. Bounded rationality, model of decision making, rejecting absolute rationality Simon, fact value dichotomy of decision making, the concept of administrative man, PD and NPD, program decision, non-program decision, the concept of opportunity cost and 0 point, एमिति 4-5टा पॉइंट साइमन रो. fact value decision making, concept of administrative man हैला, bounded rationality model, opportunity cost and 0 point, how we focus centralized decision making, प्रोग्राम डिसीजन नॉन प्रोग्राम डिसीजन बेस 6टा पॉइंट जानिलो तमर आंसर हे गला. दिस इज द ब्यूटी. बट ए 6टा पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रे बाबू कोन माने फैक्ट वैल्यू डायकोटोमी ऑफ डिसीजन मेकिंग कोन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन कोन, सोशल मैन कोन, इकोनॉमिक मैन कोन, बाउंडेड रैशनैलिटी कोन, एब्सोल्यूट रैशनैलिटी कोन, हु टोल्ड अबाउट एब्सोल्यूट रैशनैलिटी, why Simon reject that, why Simon reject Taylor's scientific management theory, opportunity cost कोन, 0 point कोन, program decision कोन, non program decision कोन, how we convert non program to program with IT, सेति के तुमको बुझिबार अछि. तो सबु पार्ट सिलेबस रो सबु पार्ट पॉलिसी फॉर कम्युनिकेशन हैला तमे किछि वर्ड जानिबो, किछि वर्ड मने रखिबो, से वर्ड को बुझिबो कि कांसेप्ट कोन, व्हाट इज द concept behind bounded rationality, what is the concept behind absolute rationality, program decision, non program decision, and life is easy. motivation रे Maslow and Hausberg देखो the most easy मते लागे पॉबेट रो सबुतु इजी होउची एटा Maslow. एटा गोटे जानिलो तमर Maslow हे गला. Maslow is that easy हैला. नीड हायरार्की Maslow कहला ह्यूमन बीइंग रो 5टा नीड अछि. फिजियोलॉजिकल नीड, safety need, social need, esteem need, self actualization need. After that he has given 6 need. तापरे एलन चैपमैन कथा इति की जाना माने गोटे भाबो गोटे थ्योरिस्ट एति की रे गोटे तमरो क्वेश्चन हे गला 20 मार्कर क्वेश्चन और 15 मार्कर क्वेश्चन. नीड हायरार्की, लोअर ऑर्डर नीड, हायर ऑर्डर नीड, प्रीपोटेंसी ऑफ नीड मिक्स, ये सब वर्ड देखो एति की वर्ड जानिलो तमे जानिलो मैस्लो. एबे मैस्लो रो मु डिसेक्ट करूची. मैस्लो जानिलो, मैस्लो बिहेवियरल थ्योरिस्ट, मैस्लो इन्फ्लुएंस फ्रॉम चेस्टर बर्नार्ड, मैस्लो इज मोटिवेशनल थ्योरिस्ट. किछि जानिलो मैस्लो's this publication, मैस्लो reject classical idea of mono motivation, focus on multi motivation. The easiest way to remember thing, इंट्रो जानी गलो बॉडी. बॉडी रे तमे जानिलो अच्छा 5टा वर्ड. ए 5टा वर्ड अछि. आ गुटे कोन वर्ड अछि, नीड मिक्स, प्रीपोटेंसी ऑफ नीड, हायर ऑर्डर नीड, लोअर ऑर्डर नीड, डेफिशिएंसी नीड, ग्रोथ नीड, बेस वर्ड. तापर तमे तमरो करिवो कि फिजियोलॉजिकल नीड कोन, सेफ्टी नीड कोन, सोशल नीड कोन, why these three are called a lower order need or deficiency need, why esteem and self actualization,
higher order need. The sixth need given by Maslow, meta motivational need, which is same as Alan Chapman's transcendence need. Alan Chapman से ଆଉ तीनटा need ଦେଇଥିଲା, cognitive, aesthetic, transcendence. बस ଏତିକିରେ ହେଇଗଲା ତମର Maslow complete ହବ। ଏତେ ପବେଟା ଏତେ ଇଜି, Maslow complete। ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଗଲା Maslow ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଲେଖିବି, ବଡି ଲେଖିବି, Maslow ର କ୍ରିଟିସିଜମ ଟିକେ କରିଦେବି, Maslow କୁ ଆଜି ଡେଟ୍ ରେ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ବୋଲି ବି ବତେଇଦେବି, ହେଇଗଲା Maslow। एंड ए वर्ड 10टा 15टा वर्ड Maslow रो जानिचो, यू राइट ए 250 वर्ड आंसर। हॉसबर्ग सेमती, हॉसबर्ग भी सेम। हॉसबर्ग कहले टू टाइप ऑफ मोटिवेशन, गोटे हाइजीन आ गोटे मोटिवेटर। एटा जॉब कॉन्टेक्स्ट, जॉब कंटेंट, जॉब कॉन्टेक्स्ट फैक्टर, जॉब कंटेंट फैक्टर। जॉब कॉन्टेक्स्ट कोन तुम बुझिबो, जॉब कंटेंट कोन बुझिबो। जॉब कंटेंट को व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोटिवेटर, व्हाई जॉब कॉन्टेक्स्ट नोन एज हाइजीन फैक्टर। तापर हमर फेमस runway or plane example. This is runway and this is a plane. এটা হলো job context factor and the thrust with it take off job content factor. And you have to compare Maslow, Hosberg and McGregor. गोटे ग्राफ रे तीनटा को कंपेयर करा हबो। जॉब कॉन्टेक्स्ट भितरे तापरे कांसेप्ट हैला कि जॉब कॉन्टेक्स्ट और हाइजीन फैक्टर भितरे कोन कोन अछि, सैलरी, वर्क एनवायरनमेंट, seniority based promotion, seniority based promotion job context factor, merit based promotion job content factor, achievement, advancement, responsibility, recognition job content factor, salary, promotion, bonus, colleague, organization policy job context factor. And as a manager you need to make a balance between the two. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दउची बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर अवार्ड कोन, जॉब कंटेंट फैक्टर। बस सेट तुम एग्जांपल दे परिबो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दउची बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर अवार्ड। हैला बस सेटा हैला कांसेप्ट। सो आई ऑलवेज फोकस ऑन कांसेप्ट कि गोटे बुझी गला अच्छा एटा हाइजीन फैक्टर, एटा मोटिवेटर, ता भीतर 10टा वर्ड 20टा वर्ड तो माइंड रे गोटे आसी गला, गोटे स्पेस क्रिएट हे गला कि हॉसबर्ग आसिले एटा मु इंट्रो लिखिबी, तार बॉडी रे एटा लिखिबी, तार कंक्लूजन एटा लिखिबी। Okay, so classical, scientific management, bureaucratic, human relation, behavioral approach.